दशकं 16 नरनारायणचरितं दक्षयागम्। दक्षो विरिञ्चतनयोधमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं। यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रवविशुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीदं साहस्रवल्सरतप समराभिलव्यैः। पर्यायनिर्मिततपः समरो भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः। शक्रोध ते शमतपोबल निस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्। कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकडाक्षविशिखैर्विगसद्विलासैः। विध्यन्मुहुरकम्बमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाध जगदे मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसं त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः। त्वं विस्मयेन परितस्तुवदामधैषां प्रादर्शय स्वपरिचारक कातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः। दत्तां त्वया च जगृहुः स्त्रभयैव सर्व स्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां। दृष्टोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन्महिमामवर्षाद्। एवं प्रशान्त रमणीय तरावताराद् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलाळनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीद्। येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्। क्रुद्धेशमर्दितमघ स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादित हरादधलब्धजीवः। त्वत्पूरित क्रतुवर पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।